أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Mashallah, een prachtige recitatie van broeder Khalid. En ik wil hem uitnodigen om elke dag te komen reciteren. Voor de volgende voordracht voor de eerste voordracht wil ik graag broeder Nouman Alisa uitnodigen. Sallallahu alayhi wa सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्ते फजर वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्ते फजर फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है करबला की खाक पर
क्या आदमी सजदे में है। वो जो आशूरा की शब गुल हो गया था एक चराग। वो जो आशूरा की शब गुल हो गया था एक चराग। अब क़यामत तक उसी की रोशनी सजदे में है। अब क़यामत तक उसी की रोशनी सजदे में है। इस पे हैरत क्या लरज़ उठी ज़मीने करबला। इस पे हैरत क्या लरज़ उठी ज़मीने करबला। राकीबे दोशे पैगंबर आखिरी सजदे में है। राकीबे दोशे पैगंबर आखिरी सजदे में है। सुन्नत पैगंबर खातिम है सजदे का ये तूल। सुन्नत पैगंबर खातिम है सजदे का ये तूल। कल नबी सजदे में थे आज एक वली सजदे में है। कल नबी सजदे में थे आज एक वली सजदे में है। मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। MashaAllah, subhanallah. Voor de volgende voordracht wil ik graag broeder Rahmat Balai even uitnodigen. Ayya. Sallallahu alayka ya Rasulallah. Sallallahu alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya Rasulallah. वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है। किस्मत के सिकंदर है।
वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, किस्मत के सिकंदर है, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आका के सना खानी दर असल इबादत है, दर असल इबादत है। आका की सना खानी दर असल इबादत है, दर असल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या Habiballah, mashallah, dag 2 van onze Muharram-lezing. En deze lezingen zijn er onder andere ook voor bedoeld om onze imaan een boost te geven. Het is natuurlijk het islamitisch nieuwe jaar. Het maakt ons nog standvastiger dan dat we al zijn. En het helpt ons ook om oprechte en reine intenties te nemen. En daarmee ook deze nieuwe islamitisch jaar te beginnen. Maulana heeft het gisteren natuurlijk ook al aangekondigd. Hè? Met de komst van Muharram zijn we ook aangekomen in het hof van Imam Ali Maqam, Imam Hussein radiyallahu ta'ala an. और आपको तो मालूम है वो हुसैन जिनको धोखे से कूफे में बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाया सताया गया, जिनके बच्चों को भूखा रुलाया गया, जिनके गर्दन पे खंजर चलाया गया, वाकई उस हुसैन इब्न अली पर लाखों सलाम. Laten we snel overgaan naar de lezing van vandaag. Laten we Maulana verwelkomen. Narai takbir. Narai risalat. Ulama ahle sunnat. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hannanil mannan. الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ذوي العزة والاحترام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। एक बार फिर मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए मा ए अशफ़े ज़माना ज़माना मदद नुमा दरहाए बस्तरा ज़े कलीदे करम कुशा। हज़रात मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, इफ़्फ़त माँ माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। We zijn Allah Rabbul Alamin dankbaar dat wij deel uitmaken van Zikr Hussein. Mahe Muharram is begonnen, nieuwe jaar, alhamdulillah, is aangebroken. En we zijn hier, alhamdulillah, aanwezig in het hof van Sayyidina Imam Ali Maqam, Imam Hussein ibn Ali radiyallahu ta'ala an, mogen ons aanwezigheid geaccepteerd worden. U weet, bij de sheet heeft net ook aangegeven dat ons doel voor al deze bijeenkomsten is dat wij nummer 1 iets leren. En nadat wij dat hebben geleerd, hebben begrepen, dat wij ook dat in het praktijk brengen. यानी अमली जामा उसको पहनाया जाए। सिर्फ इल्म रख कर, जान कर और अमल ना करना, उसके लिए क़यामत के दिन ज़्यादा अज़ाब होगा। Een persoon die niet weet en een fout begaat, die zal vergeven worden. Maar een persoon die het weet en dan een fout begaat, die zal dubbel gestraft worden. अब ये मकसद नहीं कि भाई आपको ज़्यादा अजाब दिया जाए, नहीं। weet diegene die amal doet, goede amal अपने इल्म के मुताबिक, die zal een verheven plek in het paradijs inshallah verkrijgen. यानी amali jama पहनाना, praktijk, alles wat islam zegt, wat wij van hier horen en dat in het praktijk brengen, zal inshallah in het graf en op de dag des oordeels jou inshallah succes opleveren. En in het paradijs zullen wij een hoge positie krijgen. तो दुआ कीजिए, इसी नीयत के साथ हम बैठें कि जो कुछ सुने उस पर हम कोशिश करें, dat wij proberen uiterste, मतलब अपना जो है कोशिश करें, inspannen om dat in de praktijk te brengen. Want u weet, een gemeenschap is pas gezond wanneer aman en amaan is. Amano amaan. Wanneer er vrede is. Wanneer er gehoorzaamheid aan Allah is. Dan praten we over een gezonde gemeenschap. Maar जब आदमी गुनाहों में मुब्तला हो जाता है और तरह तरह के रूहानी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, dan praten we niet meer over een gezonde gemeenschap. Dan is een gemeenschap heel erg ziek. Een zieke gemeenschap. Bijhal, we willen geen zieke gemeenschap zijn, we willen een gezonde gemeenschap zijn. तो कोशिश करें कि जो कुछ बताया जाए, जो कुछ सुने, उस पर अमल की कोशिश की जाए। एक बार फिर मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। Deze 10 dagen is eigenlijk heel weinig om over alle aspecten en alle मतलब जितने भी गोशे हैं
उस पर बहस करना, बात करना, कलाम करना, बयान करना बहुत मुश्किल है. Is niet makkelijk. Alhoewel de rode lijn, जो मुहर्रम में है, in de maand Muharram, die rode lijn wat loopt, is Imam Hussein en de वाक़या van Karbala. Maar उसके आगे पीछे जो चीजें हैं, wat heeft Imam Hussein gemaakt? वो किस तरीके से, hoe is hij Imam Hussein geworden? तो बहरहाल een mens, हम भी पैदा हुए, आप भी पैदा हुए, और माँ बाप ने जो है वो परवरिश की, zijn opgevoed door ouders, en फिर जवान हुए हैं, पढ़ने लिखने भी लिखे हैं, op school en universiteit en noem maar op. We hebben een bepaalde richting gekozen en afgestudeerd. We hebben onze diploma en noem maar op alles. We zijn aan het werk, we verdienen ons geld. शादी भी हो गया और लड़कन भी हो गया, en alhamdulillah जिंदगी गुजर रही है. Zindagi, het leven gaat door. En op een zekere dag, bij ontmoeting met Malkul Maut, वो आई और रूह निकाली, zal de रूह, de ziel, eruit halen en hij is weg. आपका जिस्म वहाँ पड़ा रही, जमीन पे या तो बिस्तर पे. लोग आपके जो अहबाब है, दोस्त अहबाब है, वो आपको नहलाएंगे, धोलाएंगे और रोएंगे, पीटेंगे, नहीं पीटेंगे तो नहीं, रोएंगे और कफनाएंगे. फिर नमाज जनाजा पढ़कर कब्रिस्तान शहर खामोशा में जाकर तोप देंगे, दफन कर देंगे और सब घर को चले जाएंगे. आप वहां पर अब अपना हिसाब दो. आपकी जिंदगी खत्म, leven is beëindigd. और कुछ लोग का जो है, wanneer mensen heen gaan, पता भी ना चले. और heel veel mensen zijn गुमनाम, नाम ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं, niemand kent hem. Mijn vraag aan die persoon, die mensen die hem niet kennen, कोई आदमी मतलब पहचान है ही नहीं, wat was jouw levensdoel? अब वो तो बेचारा बोल नहीं पाएगा, hij kan niet meer zeggen. Maar wij kunnen toch zeggen? Wij kunnen toch aangeven wat ons levensdoel is? Hij die in het begraafplaats ligt, die kan niet meer praten. Zijn tijd is voorbij, maar we zijn nog in leven. Wij kunnen aangeven wat ons levensdoel is. Levensdoel is van een moslim. Kijk, wij proberen onszelf te vergelijken of dat te doen wat anderen doen. Maar het grootste verschil tussen een moslim en een niet-moslim is... Kijk, advocaat kan een niet-moslim zijn en ook een moslim zijn. Moet je advocaat zijn? Dokter, arts, chirurg. हमारे मतलब मुस्लिम gemeenschap में hebben we dat. En mooi eten, lekker eten, goed wonen, सब कुछ है. Bij hun ook, bij ons ook. मरते वो भी है, मरते हम भी है. Maar wat is het verschil? Als ons leven precies zo is als die van niet-moslims, maar wat doe je hier? Wat voor zin heeft jouw leven? Levensdoel. We moeten doelen gaan bepalen. Wat is ons doel? En wie bepaalt ons doel? Allah en Rasul bepaalt dat. Allah en Rasul bepaalt wat ons levensdoel is. Ons levensdoel, u heeft een gezin, mashallah. En kinderen worden opgevoed. 's Ochtends een ontbijt, फिर लंच और फिर शाम को गरम खाना. Ja, उनके पास नहीं है, उनके पास भी है. Het verschil is dat wij een islamitische opvoeding geven aan onze kinderen. Wat zij niet doen. Dat is het verschil.
enige verschil is opvoeding. Islamitische opvoeding. En dat is een heel essentiële taak op de ouders. Dat zij een islamitische opvoeding geven aan hun kinderen. Waarin heel veel mensen ook falen. Nee, de pare. Kyo? Ze hebben het zelf niet gekregen. Ze zijn zelf niet ingericht islamitisch. Namaz niet part. Ouders die geen namaz lezen, wanneer gaan zij aan hun kinderen zeggen om namaz te lezen? Omdat zij zelf niet ingericht zijn, islamitisch opgevoed zijn, kunnen zij hun kinderen ook niet opvoeden. Islamitisch. Het westerse opvoeding, dat krijgen ze. En dan is het er is geen verschil meer tussen een moslim en een niet-moslim. Want wat is jouw levensdoel? Islamitische levensdoel is om Allah te behagen. Is om Rasulullah te behagen. Is om Koran en Sunnah te volgen. En als wij dat doen in ons korte leven, dan zullen wij inshallah ons doel bereiken en behalen. Begrijpt u? Inshallah. बड़े सुस्त हो गए हम कहें भाई आमीन अल्लाह करे कि भाई ये हो जाए en ici tariqe se maken wij een gezonde gemeenschap. Gemeenschap zal gezond zijn. Behal. Imam Hussein, wat heeft Imam Hussein gemaakt? कि वो इमाम हुसैन हो गए. Wat was zijn, wat waren die dingen? Nou, als we daarover gaan praten, dan zijn er heel veel dingen. Heel veel zaken. Laten we beginnen bij nummer 1. Vanaf begin af. Vanaf kleins af wordt geleerd. Wat? Sabr. Sabr, geduld. Tawakkul ala Allah. Heb vertrouwen in Allah. Dit wordt geleerd. आज तो हम अल्लाह को छोड़कर दूसरों पे फतराव करते हैं ना. बास पे काम देने वाले पर फतराव करते हैं, अल्लाह पर नहीं. हालांकि रज़ाक जो है अल्लाह है. रज़ाक इस अल्लाह. अगर उस पर आपका भरोसा है, यकीनी पूरा पुख्ता, als je standvastig bent, je vertrouwt Allah Rabbul Alamin echt heel goed, dan zal je niet eens beseffen van waar rizq komt. आपको पता भी ना चले, आपके होश, आपके ख्याल में बात आ ही ना सके कि कहां कहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन तो के रिज़्क देवे है. पता भी ना चली, खबर भी ना मिली आपको. क्या है इज्जत ook mogelijk? जब अल्लाह राजी होता है तो वो कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, हर तरफ से आता है. बस één ding कि तवक्कुल अल्लाह, heb vertrouwen in Allah. Heb vertrouwen in Allah. जब vertrouwen in Allah, तो फिर दरवाजे खुलते हैं. दरवाजा, deuren gaan open. Deuren van risk gaat open. Deuren van कामयाबी gaat open, van succes gaat open. जब अल्लाह पर भरोसा करोगे. क्यों? हर चीज, हर शय, alles komt van Allah. Alles komt van Allah. Maar sabr is een heel belangrijk, essentieel zaak, ding en een karakter. Het is een karakter, een houding, wat eigenlijk de basis vormt. अगर सबर ना हो, als je geen सबर hebt, भाई नमाज भी नहीं पढ़ पाओगे. जाओ नमाज आप पढ़ते हैं, भाई हाफिज साहब अल्लाह अकबर कितना पढ़ता है? 10-15 मिनट, 15 minuten. अब तक मैं आधा घंटा, पौना घंटा द्रिकवती sta ik hier, maar ik voel niks. Maar नमाज में खड़े होकर देखो, कन्याओं देखो कैसे पी रहा है, टेहड़ा चहड़ा होने लगी. Na 2-3 minuten begin je al zo te doen. Het doet pijn. Waarom? शैतान मुदाखलत करता है. और उसी मोमेंट पे, op dat moment is sabr werkt bij jou. Sabr gaat het werk doen. यही सबर है कि आप
20 रकत तरावी हाफिज कुरान के पीछे पढ़ते हैं, सबर की वजह से। नमाज जब पढ़ते हैं सबर ही की वजह से। तो सबर ना हो तो भाई मैं नहीं कहूँगा कि कुर्सी पे बैठते हैं, मैंने नहीं, वो भी सबर ही की वजह से बैठे हुए, वो आएगा ही नहीं कि भाई इतना लंबा। वो किसी से पूछा ना कि भाई आप रोज़ा रखते, क्या नहीं, रोज़ा नहीं रख पाता हूँ, वो दवाई, ये वो दवाई, वो दवाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तरावी तो पढ़ते होंगे? नहीं 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 नहीं, वो इतना लंबा पढ़ाते हैं कि भाई खड़ा नहीं होता है। अफगानिस्तान, सो लंग कनेक्निस्तान, हाफिज साहब, कारी साहब, इमाम साहब, इतना लंबा नहीं, वो पैर जो है वो सूज जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो रोज़ा भी नहीं रखते हैं आप, तरावी भी नहीं पढ़ते हैं, तो इफ्तारी नहीं करते होंगे आप? नहीं नहीं, इफ्तारी करता हूँ, मैं पूरा काफी थोड़ी हूँ, मुसलमान हूँ, इफ्तारी करता हूँ भाई, अल्लाह का रिज़्क है, खाना चाहिए। तो बताइए, तो ये देत ये सबर से कोई ताल्लुक नहीं है। सबर, wat gebeurt met sabr? Wat is sabr? En wat zegt Koran over sabr? En wat zegt onze profeet sallallahu alayhi wa sallam over sabr? En wat heeft Nabi sallallahu, op welke manier heeft Nabi sallallahu alayhi wa sallam zijn kinderen, op imam Hassan, imam Hussein, zijn kinderen van Nabi sallallahu, kleinkinderen van Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hoe heeft hij hen opgevoed? Aan het begin heb ik gezegd dat sabr bij imam Hussein, imam Hassan, imam Hussein is vanaf prille tijd, vanaf begintijd al. Shuru is er. Shuru, vanaf begin af. Wat gebeurde er? Wakia jong hoor. Dat imam Hassan, imam Hussein allebei, heel jong, heel klein, werden ziek. Behoorlijk ziek. Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala an, en een slavin die samen was met Hazrat Fatima, deze drie, hebben mannat gevraagd. Mannat ko kya kenge bhai? Wens. Een wensuiting. Dat, oh Allah, als deze twee, wie? Imam Hassan en imam Hussein, beter worden, dan gaan we 3 dagen lang vasten. आज तो हम वंश करते हैं ना कि भाई बड़ा आसान, heel makkelijk है कि अगर ये काम बन गया तो मैं 50 गरीबों को खाना खिलाऊंगा। भाई तुम अपने लिए कुछ करो, अपने लिए करो कि भाई मैं 10 दिन रोजा रखूंगा, मैं मतलब तहज्जुद की नमाज तो पढ़ता हूं लेकिन पाबंदी के साथ सब घर वालों को पढ़ाऊंगा। ये करो, ये मन्नत मानो। ये खाना खिलाना क्या, अगरचे खाना खिलाना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है खुद। और अल्लाह वाले औलिया इकराम vertellen, ze zeggen, de kortste weg naar de tevredenheid van Allah is ghuraba en masakin eten geven. उनको खाना खिलाओ, ये सबसे kortste weg naar de tevredenheid van Allah. लेकिन इमाम हुसैन, इमाम हसन के लिए मन्नत जो मानी गई है वो 3 dagen रोजा, 3 dagen vasten. ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, ze zijn beter geworden. और ये बात है, wanneer jouw wens uit is gekomen, dan moet je dat vervullen. Wat je had gezegd. Het is een belofte. Dat, oh Allah, als ik slaag, dan geef ik 100 euro aan de moskee. Nu dat je geslaagd bent, dan moet je geven. Dan is het verplicht om te geven. Dus tegenover de wens, als het uitkomt, wat je dan ook hebt aangenomen, dat ben je dan verplicht om te doen. Begrijpt u? Dus Hazrat Fatima, Hazrat Ali en de slavin zijn gaan vasten. En kijk, Maula Ali, alhoewel met dit woord Maula hebben heel wat mensen probleem. Dat je kan Ali geen Maula noemen. Maula is alleen Allah.
Terwijl als je Koran leest, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह भी मौला है, रसूल भी मौला है, मोमिनीन भी मौला है, आगे भी बढ़ो, जिब्राइल भी मौला है, मलाइका भी मौला है और मोमिनीन भी मौला है. मौला helper. Mawla is helper. Wie helpt jou? Wie helpt de dokter jou niet? De chirurg, helpt hij jou niet? Hij helpt. De chirurg helpt, dokter helpt. Bij die banket, broodbanket, die bakker, die helpt jou ook. Alhoewel hij krijgt geld. Nou, wie krijgt geen geld bij? Chirurg na mila paita. Snap je paita? Monteur helpt. Hij helpt, maar oké, geld. Iedereen helpt. Dus help is मतलब हर एक दूसरे को हेल्प कर सकता है, maar Allah Rabbul Alameen, de bron van hulp is Allah. उसने डॉक्टर को इस लायक बनाया है कि वो आपकी मदद कर सके. हकीकत में अल्लाह ही की मदद है. brood, raziq, razak. Wie is razak? Allah. Allah is razak. Maar waarom zit je niet thuis en zeggen, oh Allah, geef me brood? Je gaat toch naar de bakker, naar de appie, Albert Heijn, brood te halen? Dat ja niet. Waarom blijf je niet thuis en zeg, oh Allah, ik wil vandaag korma, tandoori, biryani, kebab. En laat het op de tafel gedekt worden. Gaat dat gebeuren? Nee. Alhoewel is Allah machtig om dat te doen. Ja, zeker. Hij is machtig. Hij kan dat doen. Maar wij wonen in Darul Asbab. Darul Asbab. Dunya Darul Asbab. Hier heb je sabab nodig. Middelen nodig. Dus we moeten naar de dokter als we beter willen worden. We moeten naar de monteur als auto stuk is. We moeten naar de dokter als wij ziek zijn. We moeten naar de bakker, naar de groenteboer als we voedsel nodig hebben. We moeten daar gaan. Alhoewel, Allah is razak. Dus, helper is Allah, zoals in Koran heel duidelijk staat. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Alleen u, yani alleen Allah aanbidden wij en alleen aan jou vragen wij hulp. अब वहां पर इया का नस्ताइन बोल दिया और इधर पहुंच गए भाई शौशल लगे भाई खमीता पहुंच गए भाई मदद करो हेल्प. तो अल्लाह हेल्प करी शौशाला दिल के जरिए से. begrijp je? Allah gaat jou helpen, maar via. Bharhal, Maula Ali. Op dat moment had Hazrat Ali radiallahu ta'ala an krap in de kas. Dat betekent geen geld. Hoe gaan ze ontvasten? Ze hebben gevast, de hele dag gevast. Hoe gaan ze ontvasten? Hazrat Ali is heel even weggegaan, ergens een werk verricht, waardoor hij een heel klein beetje geld heeft gekregen. Daarmee heeft hij aata wagera, joki, heeft hij gekocht. Meel om roti te maken. Alles is voorbereid, klaar. Maghribtijd is aangebroken. Ze zijn net op het punt om te gaan ontvasten. Wordt aan de deur geklopt. Een sa'il, bedelaar, miskin, gharib. En 3 dagen lang, ze hebben zonder goed ontvasten, zijn ze weer verder gegaan. Want ze hadden voor 3 dagen mannat gevraagd. Ze hebben met water en khajoor hebben ze ontvast. En gelijk daarna zijn ze weer gaan vasten. Volgende dag hetzelfde. 3e dag hetzelfde. Als je wat ouder bent, dan kan het misschien wel. Maar als je heel klein bent, 4 jaar, 5 jaar en je bent aan het vasten. En je krijgt niks om te eten. 3 dagen lang. Wat zegt moeder Hazrat Fatima? O Hussein, doe sabr. Kijk, vanaf dat moment al. Aato ghar bar sab toerhadi lakan.
प्लेटी वेटी सब फोड़ फाड़ दी कि खाना कहाँ, माँ के डांट भी पड़ी, चिम्मच विम्मच सब फेंक पाक के मारी। Maar Imam Hussein radiallahu ta'ala aan, kijk wat voor tarbiyat. Vanaf dat moment al, kleins af al, sabr koert ke baral. Koert ke. Daarin gestapt, sabr. Wat zegt Allah Rabbul Alamin in het Koran? Illa allazina amanu wal asr. Innal insana lafi khusr. Asr ki qasam. Zamane ki qasam. Waqt ki qasam, waqt asr ki qasam. Innal insana lafi khusr. Waarlijk, de mens is in verlies, grote verlies. Illa alladhina amanu. Maar diegenen. Dus die zijn niet in verlies. Wie? Amanu. Diegenen die iman hebben. Wa amilu salihat. En goede daden verrichten. Wa tawasaw bil haq. En haq aankondigen. Wat oprecht is, daarop stevig staan en aankondigen dat dit is haq. Wat tawasaw bil sabr. En dan ook sabr in acht nemen. Waarom? Als je hakbaat gaat zeggen, dan creëer je vijanden. किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में सबसे कड़वी बात जो है वो हक और सच बात है। सच बात जो है चाहे जितना सच हो वो कड़वी ही होती है और उससे आप दुश्मन बनाएंगे। En als zamana tegenwoordig is het dat als je hak zegt, dan creëer je vijanden. Wat moet je dan doen? Dan zegt Allah, tawasaw bis sabr, sabr kar. हक बात बोलो, दुश्मन पैदा हुई, सबर करो, क्योंकि सबर करने वालों के साथ इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर करने वालों के साथ अल्लाह की जात है, अल्लाह की रहमत इस met साबिरीन। तो Imam Ali Maqam, Imam Hussein, en dit is niet de eerste keer dat Imam Hussein radiallahu ta'ala sabr moest doen. Meerdere momenten zijn gekomen. Meerdere momenten. Bijherhaal wil goed uitgelegd hebben wat sabr is. Wat is sabr? Wanneer wij denken bij sabr kar yaar. Kab bolal jaye, wanneer zeggen we dat? Wanneer iemand huilt. Iemand is overleden, ja padal hai. Rowe. Sabr kar. Wat zeggen we eigenlijk en wat bedoelen we eigenlijk? Als we zeggen, doe sabr. कि चुप हो जाओ ना रो, तोर बारी आएगा, अपन बारी पे रोवे है कि क्या है? रोना सुन्नत रसूल है। मरने पर wanneer iemand overlijdt, op dat moment huilen, आंसू बहाना is toegestaan in islam. इसको कहते हैं सोग। 3 dagen, niet langer। जो उससे आगे बढ़ जाए langer dan 3 dagen, dat is verkeerd. Soog en gham is alleen 3 dagen, only 3 days. Daarna geen soog en geen gham meer. हाँ, खातून के लिए, औरत के लिए वो अलग बात है, वो इद्दत में आ जाती है, maar normaal 3 dagen. Dat denken we, dat we sabr, het woord sabr gebruiken wanneer iemand komt te overlijden. Wanneer er een probleem komt. Dan zeggen we sabr kar. Huilen is natuurlijk een uiting, een emotie wat eruit komt. En dat is gezond, is goed. Maar het moet wel met mate zijn. Andar में रहो, grens के अंदर, binnen de grenzen. Wat heeft Nabi sallallahu alaihi wasallam verboden gesteld? Wat verbiedt Nabi sallallahu alaihi wasallam tijdens een overlijding? Wat moet je niet doen? Je mag huilen, maar मातम करना, अपने चेहरे को मारना, बाल नोचना, dat soort dingen. Haram. In islam is het haram. En dat is wat Nabi sallallahu alaihi wasallam heeft verbiedt. Hij verbiedt dit om zulks te doen. इसको कहते हैं मातम। सीना को भी गरेबान चाक करना, सीने पर मारना, चेहरे पर मारना, बाल नोचना, dit is allemaal haram in islam. Mag niet. आंसू बहा सकते हैं भाई, is gewoon menselijk. grote verlies, बाप इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया, तो
ये तो इमोशंस है। अल्लाह ने इंसान को इसी तरह बनाया कि जब मुसीबत आए तो वो रोता है। तो इससे बढ़कर मुसीबत जो है वो गुनाह है, और गुनाह पर जब इंसान रोता है तो वही आंसू उसके गुनाहों को धो डालता है। अल्लाह खुश होता है कि देखो गुनाह तो किया है लेकिन पशेमानी भी है तुम उगबराओ, उसको मतलब अफसोस है, और देखो आंसू बहा रहा है, इसके गुनाहों को बख्श दो। Dus het is toegestaan op zo'n moment om te huilen. Maar niet alleen dat is sabr. कि जब कोई किसी का wanneer iemand komt te overlijden dat je dan jezelf inhoudt. Nee. इذा असाबतहुम मुसीबा, कुरान में heel duidelijk फरमा दिया है कि जब मुसीबत आए, मुसीबत क्या है? Natuurramp is een मुसीबत. Verlies van jouw rijkdom, een deel ervan, auto is gestolen, is een verlies. Auto in brand gegaan, is een verlies. En er zijn heel veel momenten. यहां तक के गुनाहों से दूर रहना, इसको भी सबर कहते हैं. Sabr is ook wanneer je ver van zonde blijft. Ver van zonde. और इसको अगर आप देखें कि अपने नफ्स को रोकने और काबू पाने के को कहते हैं सब्र करना. अपने नफ्स ये एक हो को रोके रखना. En er zijn 3, Koran en Sunnah en Hadith, als we bekijken, dan is dat onderdeel, उसको verdeeld किया है onder 3 soorten sabr. Nummer 1, dat je jezelf beschermt en behoedt van haram. Haram en najais, wat verboden zijn en wat haram is, dat je jezelf daarvan weerhoudt. नंबर 2, अपने आप को ताअत व इबादत की पाबंदी पर मजबूर करना. Dat is ook sabr. Dat je jezelf dwingt zo ver, want je wordt tegengehouden door wie भाई? Dat सबसे बड़ा वाला. Die houdt je tegen. En dan nog ervoor gaan. Je bent moe, helemaal de hele dag gewerkt. Je komt moe thuis. Maghrib के नमाज. कल पढ़ लेंगे, फौरन dag कल पढ़ लेंगे. कल करते करते अब वो कल आएगा ही नहीं. ये आखिरी दिन था भाई, कब पढ़ेंगे? तो शैतान यही करता है. शैतान probeert jou altijd te, मतलब ओके क्या कहता है, uitstel. यहाँ तक कि आपकी जिंदगी का आखिरी स्टेल हो गया, is vastgesteld. Uitstel. En daar op zo'n moment opstaan, wudu करो, कलमा पढ़कर नमाज पढ़ो, इसको भी कहते हैं सब्र. En nummer 3, masaib en afat. Rampen, problemen, wanneer dat komt, als je geduld in acht neemt, dan wordt dat ook als sabr gezien. En dat zijn allemaal verschillende soorten. Een hele rij staat hier. Dat je jezelf, अपनी शर्मगाह, je geslachtsdeel, als je dat beschermt, तो उसको कहते हैं अरबी में भी और उर्दू में भी इफ़्फ़त. इफ़्फ़त मतलब पियस. इफ़्फ़त, और मैं कहता रहता हूँ इफ़्फ़त माओ बहनों. पियस, फ्रोम, उसको कहते हैं फ्रोमheid. Wanneer ben je vroom, wanneer wordt iffat gezegd? Wanneer je अपनी आँखों की, शर्मगाहों की, ज़बान की हिफाजत करें, तो इसको कहते हैं इफ़्फ़त. और दौलत सरवत की बहुतात की हालत में, dat je heel veel maal en dौलत hebt, maar toch Allah Rabbul Alamin dankbaar bent. Want क्या होता है, wat gebeurt er wanneer iemand hoog in positie komt in rijkdom, dan meestal vergeten zij de gever. जिसने माल दिया उसको भूल जाते हैं, और जब माल खत्म तो फिर उसी के दरवाजे पर. ये होता है. Maar op dat moment,
अल्लाह दंग बारसैन, इसको भी सबर कहते हैं। और इसको वैसे भी मतलब सबर कहते हैं। और जबते नफ्स कहते हैं, dat je je ego onderdrukt, dat die niet hoogmoedig wordt. Want als je भाई multimiljonair bent, hoe gaat zo'n persoon lopen? Hoe loopt zo'n persoon? brede schouder. चाहे जितना पतला दुबला है, maar hoe bezig चली? Waarom? भाई, bankrekening is niet groen, donkergroen. Helemaal groen. Dus dan wordt die moedi भी बड़का हो जाए. Maar op zo'n moment दरमियानी चाल चलना, इसको भी सबर कहते हैं। हिल्म, wanneer je गुस्सा, बोस bent, kwaad bent, उस वक्त भी सबर करो, इसको कहते हैं हिल्म, इसको कहते हैं हिल्म। और wanneer दूसरों की राज को पोशीदा रखना, आई 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 आई, geheimen van anderen verbergen। फैमिली में, हर फैमिली में कोई ऐसा है जेकरे पेट में बात ना रहे। हर फैमिली में कोई ना कोई है, और सब कोई बोली कि भाई ओके ना बताइए, ओके अपन राज के बात ना बताइए, अगर बता डाले तो खानदान का पूरा गांव जांचना ही, इतनी खत्म है। Iets wat aan jou wordt toevertrouwd is amanat. Ik zeg het al, bestuur, moskeebestuur of verenigingbestuur, wat dan ook, hukumat. Als daar iets wordt besproken, dan is dat amanat. लेकिन हमारे यहाँ पर भैया इतना बड़का होल है, अब बात यहाँ हो, wordt nog gesproken, wordt nog vergaderd, maar bahir niet krijgen. Ja, begrijp je dus? En als je dat doet, मतलब ना फैलाना, रखना, het verbergen van raaz en geheime zaken, verbergen, इसको भी सबर कहते हैं। और इसको कहते हैं कितमान सिर, जो मतलब पोशीदा है, जो बात पोशीदा है, कितमान का मतलब उसको पोशीदा रखना। और वनीर, ये heel weinig है। कभी कभी होता है कि भाई घर में खाना ना है या कमती है, उसी पर सबर करना, उस पर भी सबर करना कि अल्लाह की मर्जी भाई, ना आए पायल कुछ, और यही है जो है यही खाओ, यही तो तरस, एंड इस पर सबर करना, इसको कहते हैं कनाअत, ये भी सबर है। एंड we zien hoe mensen leven tegenwoordig mensen die heel fashionable dragen, बहुत ही मतलब modern dragen करते हैं, heel modern zijn, उनको कहते हैं हाई स्टैंडर्ड। हाई स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और जो दुपट्टा पहन ले, हिजाब करे, लो स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड। चाहे करोड़पति हो, वो खातून करोड़ महाकरोड़पति हो, और अगर बुर्का पहन ले, हिजाब कर ले, तो लोग क्या कहते हैं, लो स्टैंडर्ड। और बेहिजाब हो जाए, जितना कम कपड़ा उतना ही हाई स्टैंडर्ड। Dat is tegenwoordig. En de mens houdt van kopiëren। भाई हम भी उलमा की कॉपी करते, भाई हम जो इस वक्त खड़े होकर कर रहे क्या है, ये कॉपी है भाई। हम नमाज पढ़ रहे हैं, आप नमाज पढ़ते, ये क्या है, आपने इजाद किया, कॉपी करते ना। नबी ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ, कॉपी कर लो। तो उस टाइम से आज तक, कयामत तक लोग नमाज कॉपी करके करेंगे, पढ़ेंगे। वो कॉपी रख रहा। ये अच्छी बात है कि आप नमाज में कॉपी करो कि किस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, अच्छा कॉपी करो, अच्छा कॉपी करो। जब इंसान मुसलमान मस्जिद में काम कर रहा है,
यहाँ सफाई कर रहा है कि भाई चलो इसके तरह मैं भी करूं, कॉपी करो, वो ना हुई। मस्जिद सफाई हो रहा है, भाई एक आदमी बेचारा बूढ़ा वो कर रहा है, जवान आया कि हाजी साहब बैठ जाओ मैं करता हूं, कॉपी इन दत सो देंगे। अच्छे काम में कॉपी करो, मैं बात दूं भाई, जो हाई स्टैंडर्ड का है वो कॉपी करते हैं। Terwijl sabber आपके omgeving is zo high standard geworden कि भाई ना शर्मो हया का लिहाज, ना दीन के पासदारी, ना शरीयत की पाबंदी, कुछ ना, alles overhoop gegooid. En op zulke momenten, wanneer mensen zahi baat है, पैसा है और पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा कपड़ा छीन लेता है, नंगा कर देता है, क्यों? पैसा है। तो ऐसे मोमेंट पे kijk, nafs wil heel wat dingen. Als men ziet hoe mensen leven, बड़ी गाड़ी चलाते, नफ्स शैतान जो है बोले तू भी चलाओ, तू भी ऐसे रहो, तू भी ऐसा कर, doe jij ook hetzelfde. Maar op zulke momenten, जब ऐश और इशरत आम हो जाए और al die zaken wat eigenlijk tegen islam is gebeurt, op zulke momenten उसका मुकाबला करना, tegenwerken, इसको भी सबर कहते हैं और इसको इस्लाम में कहते हैं ज़ुहद, तक़वा। ये भी सबर का एक किस्म है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफ़ज़त वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इस्तिआनत, मदद, hulp, vraag hulp door middel नमाज एंड सबर। अब देख, नमाज इज गैरुल्लाह एंड सबर इज गैरुल्लाह, और दोनों से मदद लेने को अल्लाह हुक्म दे रहा है हमको। अल्लाह geeft opdracht om door middel namaaz en sabr isti'anat hulp te vragen। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, लेकिन यहाँ पर सबर का जिक्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। आगे इरशाद फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि अगर तुम सबर करो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। अल्लाहु अकबर। ये कुरान खुद कह रहा है कि सबर करना, सबर इन acht nemen बड़ी हिम्मत के काम है। Je moet echt sterk zijn om सबर te kunnen doen। आयात तो ऐसी है, इतना ज्यादा है कि पढ़ते पढ़ते घंटा लग जाए, और अतलस तो अब दूसरी बात है, बहुत ज्यादा आयात है सबर के बारे में। Maar wij moeten één ding begrijpen, dat Nabi sallallahu alayhi wasallam heeft zijn kleinzonen imam Hassan en imam Hussein allebei पूरा जो है सबर का पहाड़ बना दिया, berg van sabr। Een berg kan je nauwelijks, onmogelijk van zijn plaats schuiven. En dat is imam Hussein. Als het gaat om sabr, dan zien wij imam Hussein op de vlakte van Karbala. उससे पहले मदीना मुनव्वरा। फंदार सबर दामन में समेट कर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा, वहां भी wanneer overal van de wereld mensen richting Mekka komen, op dat moment verlaat imam Hussein Makkatul Mukarrama sabr, sabr in acht genomen, और करबला के मैदान पर अल्लाह अकबर जो वाक़ियात आपने सुने हैं, इस totaal van A tot Z सबर en nog सबर, सबर ही सबर। आंखों के सामने औलादे ज़ैनब, आंखों के सामने औलादे अकील, आपके भाई और जितने भी हैं, हज़रत अब्बास, uiteindelijk आपका बेटा, uw eigen zoon, हज़रत अली असगर, Ali Akbar, allemaal worden omgebracht. Kijk, het is heel makkelijk, hè? We praten over imam Hussein.
En we zeggen, ja, imam Hussein stond daar. Hij zag al dit gebeuren. Maar hij stond als een paard. Wo Hussein. Wij hebben geen besef wat op dat moment gebeurde. We horen het wel aan. Jarenlang horen we wat op de vlakte van Karbala is gebeurd. Maar als u vandaag op straat loopt, op een kruising en u ziet een ongeluk waarin iemand omkomt, voor uw ogen. Iemand wordt aangereden en meegesleurd. Uiteindelijk is die persoon helemaal dood, morsdood. En het is allemaal voor uw ogen gebeurd. Het zit op uw netvlies. Het zit allemaal. Gaat u kunnen slapen? Trauma. Het is geen familie van u. Het is geen vriend van u. Het is een mens. Met wie het is gebeurd. U bent ook een mens. Die persoon die meegesleurd is en dood is ook een mens. Wat doet het bij u? Heel wat. Heel wat. Misschien gaat u op dat moment niet eens een stap kunnen zetten. Jij zegt, vries, shock. In een shocktoestand. Het is niet makkelijk voor uw ogen iemand zien die doodgaat. Is niet makkelijk. We praten hier makkelijk. Imam Hussein, 72 mensen zijn omgebracht op de vlakte van Karbala. De laatste daarvan was Imam Hussein zelf. Wij zien maar één. Bij Kutam koi maar de. To hum घबरा जाते हैं. Laat staan een mens. Maar wat heeft dat gedaan met Hazrat Imam Hussein? Hoe heeft Hazrat Imam Hussein dat kunnen verwerken? Dan zien wij moeten beamen en toegeven dat Imam Hussein sabr doet salam in hof van Imam Hussein. Sabr is eigenlijk een sadaqa van het huis van Imam Hussein radiyallahu ta'ala. जिसको अगर सबर आ जाए तो उसको भी दरे हुसैन से मिलता है. सबर दरे अली से होकर हजरत इमाम हुसैन से लोगों तक पहुंचता है. हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु heeft zo een voorbeeld neergelegd कि क़यामत तक कोई ऐसा voorbeeld कभी नहीं कर सकेगा. कोई भी नहीं इस सतह पर और इस पोजीशन पर op zo'n hoog niveau sabir zijn gaat nooit meer gebeuren. En daarom is het belangrijk dat wij de uswa van Imam Hussein radiyallahu ta'ala altijd in ons hersenen, in ons gedachten hebben. Dat wat heeft hij gedaan en voor wie heeft hij dat gedaan? Al die opofferingen. Voor de Ummah. Ummat Mustafa. Voor ons. Zodat wij islam makkelijk kunnen bewandelen. De juiste islam kunnen praktiseren. Daarvoor heeft hij dat gedaan. और हम क्या कर रहे हैं? बहरहाल ये मौका है, मोमेंट है om stil bij te staan. Wat doen wij? हमारी माएं बहनें die vandaag hier niet zijn, die nauwelijks naar de moskee komen, nauwelijks contact hebben met islam. कौन से जवाब देंगे क़यामत के दिन? Aan Imam Hussein, aan Hazrat Zainab, aan Hazrat Fatima? Wat voor antwoord heb je klaar liggen? वो नौजवान जो दीन से दूर है, नमाज में सुस्ती करते हैं, wat voor antwoord zullen we hebben wanneer Hazrat Ali Asghar gaat vragen? Dat is het geweest, mijn bloed. Is het zo geweest, zo sasta, itna sasta, कि तुम नमाज भी नहीं पढ़ रहे? तो क्या जवाब देंगे? Wat voor antwoord hebben we? Bereid je voor, als we zeggen dat wij Ghulam Hussein zijn, niet alleen bij woorden, bij amal moeten we Imam Hussein zijn, Ghulam van Imam Hussein zijn.
bij woorden, bij daden moeten we ghulam zijn van imam Hussein. En sabr heeft Hazrat Imam Ali Maqam, Imam Hussein, succes gebracht. Zo hoog dat zijn dastaan, zijn waqia tot qiyamat. देखिए, इस्लाम में बहुत से शोहदा हुए हैं. Er zijn heel veel शोहदा in इस्लाम. लेकिन जिक्र किसका होता है? ज़्यादातर इमाम हुसैन का. इमाम हुसैन ही का जिक्र होता है. क्यों? इसलिए कि उन्होंने वो काम किया है, मतलब जितने सहाबा थे कुर्बानी दी है, opofferingen was om islam te verspreiden. Islam verspreiden. और इमाम हुसैन ने जान दी है इस्लाम te beschermen. Is verschil toch? Verspreiden en beschermen. Alhamdulillah. कुंबा के कुंबा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया हमारे लिए. और हम क्या कुर्बान कर रहे हैं ये सोचने की बात है. हमने क्या करना है. अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी सब्र अता फरमाए. हर मौके पर सब्र करें. Op iedere moment dat wij sabr in acht nemen en dat wij een voorbeeld worden van imam Hussein, imam Ali Maqam, imam Hussein radiyallahu ta'ala. खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए. या नबी सलाम का या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह का रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन. तशरीफ रखे. एक बार अलहम्द शरीफ, 3 बार कुल शरीफ पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन. कुल हुवल्लाहु اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. मालिक मौला आज की इस महफिल को, महफिल हुसैनी को कबूल व मकबूल फरमा. महफिल की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जो कुछ तेरे पाक कलाम की तिलावत हुई है और बारगाह रसूल में जो हदिया नात, दुरूद सलाम, फातिहा, शिन्नी, लंगर, जो कुछ का इंतज़ाम किया गया है, जो कुछ पंद नसीहत की बातें हुई हैं, मालिक मौला इन तमाम उमूर को बारगाह आलिया में दर्जा कबूलियत अता फरमा और तमाम के सवाब व बरक़ात सबसे पहले तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश है, कबूल फरमा. हुजूर के सदक़े तुफ़ैल तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम, साहबा साहबात, अज़वाए मुतहहरात, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, बिलख़ुसूस हज़रत इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा. शुहदाए करबो बला के बारगाहों में पेश कबूल फरमा. तमाम ताबीन, तबे ताबीन, औलिया किराम, अइम्मा मुज्तहिदीन, शुहदाए किराम की बारगाहों तक पहुँचा. तमाम सलासिल के बुजुर्गान सिलसिला क़ादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, अशरफिया की बारगाहों तक पहुँचा. हुजूर सैयदना गौसे पाक की बारगाह में पहुँचा और बेखुसूस सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में पहुँचा. तमाम औलिया किराम, सूफ़िया किराम, बुजुर्गान दीन की बारगाहों में पहुँचा. तमाम मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनी, मोमिनात, हाज़रीन की जितने भी अरवाए हक़दार है सबके अरवाह तक पहुँचा. बिलखुसूस फ़ैमिली अब्दुल के जितने भी अरवाए हक़दार है सबके अरवाह तक पहुँचा. माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं, मालिक मौला मुहर्रमुल हराम के सदक़े सबकी तू बख्शिश मग़फ़िरत फरमा. सबके दर्जात को बुलंद फरमा. बरज़ख़ी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना. रूहों को आला इल्लिय्यीन में इज़्ज़त की जगह ता फरमा. क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा और जन्नत में सबको आला से आला मकाम अता फरमा. तमाम हाज़रीन के लग़्ज़िशों को, गुनाहों को दरगुदर फरमा. रब्ब करीम हमारे दिलों को साफ़ और पाक फरमा. मालिक मौला हर
किस्म की कुदूरत और नजासत से हमारे सीना को पाक और शिफा फरमा, हमारे सीना को पूरा मदीना बना। मालिक मौला हमारे दिलों को अपने महबूब के नूर से मुनव्वर और मुजल्ला फरमा, रसूल की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, रसूल, आले रसूल, असहाबे रसूल सब की मोहब्बतों को हमारे दिलों में जागुज़ी फरमा और इन सब की मोहब्बतों में हम सबको जीना मरना नसीब फरमा। बीमारों को शिफा कुलिया व आजला नसीब फरमा। बिलखुसूस जनाब हाजी अब्दुल सत्तार साहब, दीन मोहम्मद रेमोन साहब, उनको तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमा। मालिक मौला तू ही शाफी है, तू ही शिफात देने वाला है। मालिक मौला तो उन्हें तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमा, और जो बीमार है, घर में है, अस्पताल में, मालिक मौला तो सबको तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमा, सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमा। आलम इस्लाम पर करम फरमा, मजलूम मुसलमानों को इमदाद व नुसरत फरमा, बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, और जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम है उनको मालिक मौला गैब से मदद फरमा, उनको हर किस्म के जुल्म व सितम से निजात अता फरमा। हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को अपने महबूब के सदक़े में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़ी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। Alhamdulillah.